The new topic is communication. As you can see, the word communication is derived from the Latin word communis, that means the common understanding. So, communication is nothing, it is the exchange of the information, feeling, facts, views, ideas, along with the common understanding between the sender and the receiver of the message. तो हम कह सकते हैं संप्रेषण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार, भावना, किसी की मत, किसी के ओपिनियन या कोई भी तथ्य का आदान प्रदान किया जाता है, किंतु किसी भी सूचना का आदान प्रदान संप्रेषण नहीं कहलाता है, क्योंकि अगर सूचना का आदान प्रदान तो किया जा रहा है किंतु अगर उसमें आपसी समझ नहीं हुई तो वो संप्रेषण नहीं कहलाएगी। संप्रेषण तभी कहलाया जाएगा जब सूचना का आदान प्रदान होने के साथ साथ जो सेंडर है, सूचना देने वाला प्रेषक, और सूचना को लेने वाला जो है, उन दोनों के जो प्राप्त करता है सूचना का, उन दोनों के बीच में एक आपसी समझ पैदा हो। तो आपसी समझ का, कॉमन अंडरस्टैंडिंग का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर giving some information to any person and that person is not paying attention, that means he did not understood the information. So there is no common understanding here, so it won't be known as communication. It will be called as communication only when the receiver also understanding the information, paying attention and understand the information in the same way as you want to communicate to him. Now let's see the elements in the process of the communication. So the elements in the process of the communication include sender, message, encoding, media, decoding, receiver and feedback. These are the main elements in the process of communication. Besides this, there is one more element of communication and that is noise. But the noise element of communication is not always present. It is not necessary that every communication has the element of noise. So it is an extra element. So let's see the elements of communication. First is the sender. Sender is the person who sends the information, message, idea, suggestion. Sender is therefore is known as the source of the information or source of communication process. Message is nothing, it is an idea, suggestion, feeling, view, anything that just come in the mind when we want to communicate something, some information or anything. So the ideas or feeling that generate or comes spontaneously in the mind, that idea, feeling, suggestion is the message that we want to communicate to the receiver. Second element is encoding. Encoding is the process of converting the message or idea that came into the mind in symbols. The symbols can be in any form. It can be in the words, or it can be in the picture, it can be in the gesture or postures. So when any idea comes in the mind or any feeling comes in the mind, then in order to communicate that idea or feeling to the receiver, that idea or the feeling get converted into different symbols. In words, picture, gesture, posture, in any symbol. Then the third element in the process of communication is media. In order to communicate the information to the receiver, we need a medium from which that information will flow towards the receiver. That medium is known as the media of communication. The channel or the media of communication can be in any form. It may be in the written form, it may be a phone conversation, it may be through internet, or it may be face to face. Fourth element now is decoding. Once the message is obtained in the mind or feeling comes in the mind, then it is converted into different symbols like word, pictures, gesture, and through a media like a telephone or internet, it is communicated towards the receiver. But after, when the information goes through the media, receiver first receive the information and first decode the information.
Decode means converting that symbol into the useful information. That means understanding the information. So, when the receiver receives the information, receiver decodes that information. That means again convert that symbols, word, pictures into his understanding. He tries to understand that information so that the message which is sent by the sender should be understandable to the receiver in the same way as the sender want. And the last element in this process of communication is the feedback. Feedback means acknowledgement of the information sent by the sender from the receiver, where the receiver ensures and confirms that he has received the information and he has understood the message. Feedback is very important because it gives the surety to the sender that his information is understood by the receiver, and whatever the information or the task given by the sender in the message or idea given by the sender in the message will be used in a proper way by the receiver. So the feedback will determine whether the information is correctly reached to the receiver or not. तो संप्रेषण की प्रक्रिया में जो जो एलिमेंट्स और तत्व आए हैं उन्हें देखते हैं। तो कौन कौन से तत्व आए हैं? एक तो प्रेषक, संदेश भेजने वाला, संदेश, इनकोडिंग, माध्यम, डिकोडिंग, संदेश प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। अब इन्हें हम समझ लेते हैं। प्रेषक जो होता है संदेश भेजने वाला इंसान होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई संदेश, कोई राय या कोई सूचना प्रदान करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कौन होंगे? आप प्रेषक होंगे, संदेश भेजने वाले होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो संदेश होता है या जो संप्रेषण होता है उसका जो स्रोत होता है वो एक प्रेषक होता है। दूसरा होता है कूट या संदेश। कूट या संदेश कुछ भी हो सकता है, एक विचार हो सकता है, एक सुझाव हो सकता है, कोई आदेश हो सकती है, कोई सूचना हो सकती है, कोई राय हो सकती है, कोई मत हो सकता है, कुछ भी जो कि एक प्रेषक भेजना चाहता है। इसके बाद है एनकोडिंग। एनकोडिंग एक प्रक्रिया है जिससे जो संदेश है, जो विचार, भाव, सुझाव, आदेश जो भी प्रेषक भेजना चाहता है उसको वो एक संकेतों में क्या करता है? परिवर्तित करता है। संकेत किसी भी प्रकार के हो सकते हैं क्योंकि कोई भी सूचना किसी भी संकेत में भेजी जा सकती है। संकेत के जो है आपको उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि शब्दों में आप कोई भी सूचना भेज सकते हैं, तस्वीरों में भेज सकते हैं, आप ग्राफ में भेज सकते हैं। तो ग्राफ, तस्वीरें, चित्र, व्यवहार, शब्द आदि क्या है? ये एक प्रकार के संकेत है। तो जब भी कोई संदेश, विचार, सुझाव, आदेश जो भी परिवर्तित किया जाता है किसी भी संकेतों के अंदर, तो इस प्रक्रिया को हम एनकोडिंग कहते हैं। इसके बाद होता है माध्यम। जो प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश है उसको संकेतों में परिवर्तित किया गया, किंतु ये जो है ये प्राप्तकर्ता तक पहुँचेगा कैसे? किसी एक माध्यम के ज़रिए। तो माध्यम जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो एनकोडेड मैसेज होता है, जो संकेतों में परिवर्तित किया गया मैसेज होता है, वो प्राप्तकर्ता तक भेजा जाता है। माध्यम किसी भी रूप में हो सकता है। कई प्रकार के माध्यम होते हैं सूचना के लिए, संप्रेषण के लिए, जैसे कि इंटरनेट। आप चाहे तो आमने सामने भी कोई भी सूचना, संदेश भेज सकते हैं। फेस टू फेस, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि के ज़रिए आप जो है संदेश को, विचार को या सुझाव को प्राप्तकर्ता तक भेज सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट तत्व, डिकोडिंग। जिस प्रकार से संदेश को संकेतों में परिवर्तित किया गया उसी प्रकार से प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करने के पहले उसे समझने का प्रयास करता है। तो डिकोडिंग कुछ नहीं है बल्कि ये इनकोडिंग का उल्टी प्रोसेस है, जहाँ पे जो भी शब्द आए हैं, जो भी मैसेज आया है, संदेश आया है, चित्र के तरीके से आया हो, तस्वीरों से आया हो या शब्दों से आया हो या इशारों से आया हो, उसे समझने का प्रयास जो है
प्राप्तकर्ता करता है। फिर अगला तत्व संदेश प्राप्तकर्ता। तो आप सभी जानते हैं संदेश प्राप्तकर्ता वो व्यक्ति जिसको संदेश भेजा गया है। प्रतिपुष्टि दूसरा। तो प्रतिपुष्टि जो तत्व है वो संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के प्रेषक को भेजा जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि जो संदेश है वो प्राप्तकर्ता द्वारा ग्रहित कर लिया गया है तथा उसे प्राप्तकर्ता द्वारा समझ भी लिया गया है। तो प्रतिपुष्टि बहुत आवश्यक होती है। ये सुनिश्चित करती है और बताती है कि जो भी सूचना भेजी गई है वो प्राप्तकर्ता द्वारा उसी प्रकार से समझी गई है जिस प्रकार से प्रेषक समझाना चाहता है या उस प्रकार से नहीं समझी गई है। तो हमने संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों को देख लिया है। वी हैव सीन द एलिमेंट्स of communication process. Now we will see the next topic in the next video.